Hello, hello. It's not a planned live. Hello, hello. Whoever's watching. I can see 5 people. Like I said, it's not a planned live. And I'll keep this short and sharp. I was in one mind just to make a video and then just post it. But if I'm honest, I've never really made a video. Sat Sri Akal, Sandeep ji. Ki hala? Hello, Swara. Welcome, welcome. Six of you watching. चलो मैं भी थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, थोड़ी इंक्रीज होगा तो मैं बोलूँगी, लेकिन होगा ये बहुत शॉर्ट सा लाइव होगा. What's the topic? The topic is friends or foes? Friends, foes, frenemies. See, we came onto YouTube. Sandeep, I will talk about it, but not on this live. I might do. What's today? Today's Thursday. Maybe on Friday. Yeah, maybe tomorrow we can talk about Epstein if you like, Sandeep, because there's many angles to this whole Epstein saga. It's not just about the the horrific abuse that he did and all the trafficking of those young girls and the abuse and all that, but it's how he actually spun a massive web, which I describe as a matrix, and it was to lure powerful people of the world into his trap so he could use, abuse, and basically see, this is my view. This is my no, kal nu karange, because otherwise, see, I have to, because it's quite political as well, and I want to talk about the political angle, and not so much about the sexual abuse because that can be quite triggering for everybody. But I want to talk about the impact of what he's done on world politics today. But वो चलो मैं कल नु करूँगी, definitely. Hello Parmar, hello Tanu, hello. कौन है? हाँ, तो मैं क्या कहने वाली थी? In fact, Sandeep, if I'm honest, I'd rather talk about Epstein, and not because it's a hot topic. I don't really jump onto hot topics. It's because what's happened here with Mandelson and Randy Andy, and when I say Randy Andy, it's the artist formerly known as Prince, and you know, Tuti Akiyastama, and how he actually was complicit. I do not believe for a minute that he did not know that Mandelson had leaked highly sensitive information to Epstein and others. चलो मैं क्या बात करने आई थी? मैं कुछ कहने आई थी यार. I've forgotten. हाँ, that's good. I've forgotten. चलो. हाय मैं पागल या मैं पागल या मैं पागल हो जाना. हाँ, right. Okay, friends and foes. मैं ये बात करने आई थी, और I'll make a disclaimer right now कि मैंने अपने कानों से नहीं सुना.
मैं अपने कानों से नहीं सुना। ओके संदीप जी। अम, लेकिन मैंने सुना है, मतलब मेरी बातों-बातों में काफ़ी कुछ समझ आ गया है मुझे। और जब मैं कहती हूँ ना कि मैंने नहीं सुना, एंड देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने नहीं सुना और मैं सुनूँगी भी नहीं, बिकॉज़ ऐसी बातें कानों में पड़ती हैं तो फिर मुझे तो गुस्सा आएगा, है ना? तो ना मैं सुनती हूँ, ना मैं देखती हूँ। एक पुराना रिश्ता है, उसका क्या कहते हैं, पास रखते हुए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, ठीक है? बोलती इसलिए इसलिए नहीं हूँ बिकॉज़ मैं सोचती हूँ कि चलो बोलने से पहले शायद वो बंदी सोचती नहीं है। लेकिन जो ना आज मेरे कानों में पड़ा है, सुन लेती तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता, लेकिन रफली हेलो प्रतिभा, हेलो उर्वशी, um, to wish someone unwell or to wish someone कि वो फिर ऐसा हो जाएगा. Are you in your senses? Are you really in your senses when you're wishing illness on people? Obviously, it's a very sensitive topic for me. So, and this is what I'm talking about, friends or foes. Friends, yes, we came onto YouTube, हम YouTube पर आए हैं और यहाँ हमें अच्छे लोग मिले हैं, वो दोस्त बन गए हैं। हमें यहाँ जो लोग इतने अच्छे नहीं हैं, चलो उनसे कभी दोस्ती थी, फिर दुश्मनी में बदल गई, लेकिन ये दुश्मनी भी ना ये यूट्यूब तक की होनी चाहिए। ये नहीं that you get so personal. Hi Rich. ये दोस्ती जो दिल से मानते हैं वो तो दिल से मानते हैं। अगर कभी कोई दुश्मन बन भी गया था ना, टाइम पाकर वो जो गुस्सा होता है ना, जिसे हम समझते हैं कि ये अब मेरा दुश्मन है, वो गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो फिर वो लोग दुश्मन के कैटेगरी में भी नहीं आते। एंड स्पेशली अगर आप एक दूसरे के रास्ते में आते ही नहीं, ना उधर से वार होता है, ना इधर से वार होता है। तो एंड देन यू नो ये कई लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि चलो रास्ते अलग हो गए, नेवर द ट्वेन शैल मीट, ना अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है, ठीक है? ना दोस्त ना दुश्मन, ये कैटेगरी आ जाती है। लेकिन जिसे हम दिल से दोस्त मान चुके हैं, तो मैं एग्जांपल दे देती हूँ, 2 एग्जांपल चल मैं दे देती हूँ। ऋचा का, बड्डी ऋचा का और छोटी ऋचा का, ठीक है? मुझे नहीं पता छोटी ऋचा सुन रही है कि नहीं है, लेकिन बड़ी ऋचा यहाँ है, तो मैं नाम ले सकती हूँ, मैं दोस्त मानती हूँ, ठीक है? लिटिल छोटी ऋचा को भी मैं दोस्त मानती हूँ। छोटी ऋचा, her temper's like mine. राइट, इट फ्लेयर्स हर वक्त नहीं, लेकिन उसको भी जब गुस्सा आता है वो बोल देती है, ठीक है? और एंड शी वाज अपसेट विद मी, इट्स ओके, शी गॉट अपसेट, um she blocked me, we didn't talk for a few months, लेकिन क्या इससे मेरी फिर दुश्मनी हो जाती है? अगर इसी दोस्त के बारे में मुझे कोई कुछ बुरा बोलेगा, मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी? No. Why? Because, and I'm just using this as an example, don't start taking me literally, लेकिन वो तो मेरी दोस्त रहेगी, है ना? अगर मैंने कुछ कह दिया and then she took exception, right, on YouTube, because maybe we support different people or we've got different ideologies, क्या हम दुश्मन बन गए? लेक्चर कम दिया करो, लेक्चर तभी दिया करो अगर इफ यू फॉलो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच।
जो दोस्त होता है वो दोस्त रहता है, चाहे आप नाराज भी हो जाओ एक दूसरे से। ऐसे क्या बहन भाई नाराज नहीं होते? हेलो स्मृति, हेलो, आई होप आई हैवंट मिस्ड एनीवन। आपको मेरा फंडा पता है ना, व्हेन आई गेट डिस्ट्रैक्टेड मेरी फिर फ्लो खत्म हो जाती है। बोल के मैं नाम लेके भी बोल सकती थी, लेकिन आई वोंट, बिकॉज यहाँ दुश्मन, जो एक्चुअल दुश्मन है वो बहुत बैठे हैं और वो फिर एडवांटेज टेक कर सकते हैं। बोलने को मैं रिचा की लाइफ पर जाकर भी बोल सकती थी, लेकिन ये रिचा का मुद्दा ही नहीं है, तो मैं क्यों उसकी लाइफ डिसरप्ट करूं? जब किसी में भी जो भी आपका डिफरेंसेस होता है, sort it out one to one or go quiet. Be quiet. Shut your mouth. Talk to that person direct. Do not go into that space where you're deliberately hurting a friend. Be it directly, indirectly, with taunts. Because what you're doing, you're giving other people the opportunity to then add more hurt to the person that you're taunting. And YouTube hasn't suddenly given everyone a license to become moral police. Stand. There's a stand. We take a stand for things that we feel very strongly about. Take a stand. That's fine. But if you're going like a pendulum one way and the other way and the other way, and you know what? And that pendulum's hitting people and they're getting hurt. So either your stand's wobbly, it's only got two legs, I suggest you start using that third leg. So I'm not going to say any more than this. Huh. Now I'm calm. And I don't care. You know, no one needs to tell me that, oh, you did a live and then guess what? Someone's come and then she's given you a reply and she's done this. I really don't give a flying. What I'm saying is, if you're a friend, then you're a friend. Isme, this whole frenemy zone does not work on YouTube, because it causes major issues. You're either a friend or you're not. Okay? Or if we're going to take it to the extreme, be a friend, but don't be a friend or be a foe. Do not, वो जो बीच का रास्ता है ना, कि किसी को क्लोजर देना ही नहीं है, या सब कुछ करके सब कुछ बोल के डिनाई कर देना, या फिर ऐसे कन्वर्ट कर देना कि हाँ मैं आपको मेरा पता ही है, मैं कह देती हूँ, या नहीं मैं तो मजाक मजाक कर, नहीं, इस in this friend zone thing, there's no scope to taunt your friends. Yes, we taunt our foes. Yes, we taunt people who are making other people's lives miserable. I have never known Tanu to make anyone's life miserable. हंसती आती है, मखौल करती है, साफ दिल की है, जो मुंह पे होता है वो बोल देती है. So that's what I had to say. I said I would keep it short and sharp. I've said it. I don't care whether you sit for an hour, 2 hours tomorrow, ring me out. I really do not care. But one, your friend is your friend. Two, do not go down that route, please, where you're wishing bad upon people. I don't know the context. So to some degree, I may have the whole thing out of context.
ठीक है? लेकिन you cannot have one rule for you and another for another. और मैं ये भी नहीं मानती कि जब हम ऐसी किसी को बद्दुआ देते हैं कि वो लगती है किसी को। सारिਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। कर्मों अपने अपन अपनी क्या नेड़े क्या दूर। Seriously, guys, think. Think before you speak and you utter that type of rubbish. She's your friend. You've got to understand what friendship is. You've got to understand what loyalty is. 100 बार आपके मनमुटाव होंगे, because that is the nature of friendship. That's what happens. We cannot agree on everything. Okay? Sometimes people irritate the shit out of us, right? But when you're friends, if one person is getting irritated, the other friend will understand why. There could be a million reasons behind the scenes why a person's getting irritated, and they'll go, "Oh, Ninda's a bit out of order today." And you know what? A good friend will go, "Yeah, but you know what? There's things going on." Or I'll think, "Oh God, that person was a bit harsh that day," and and suddenly it'll click, thinking, "Oh God, yeah, I know. She's got this going on in her life. Yeah, you know, I'm getting a bit irritated. Maybe I shouldn't." There's no concept, Smriti. Hi, Smriti. There's no concept of agreeing to disagree. You know, there's this whole. I don't know why people. I don't know if it's. You know, there's a real confusion. I get really confused that superiority complex and a persecution complex. You mix it together, and what do you get? You get this sort of crap. Ah. Hi, the 50K30. Hi, I don't know who you are, but hello. Anyway, so have a word with yourself. You know, this happened before. And I, for one, I intervened because I actually thought your friendship was solid and it was good. नोक झोंक हो जाती है, चलो ठीक है, ऐसे हम सब की हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है दोस्ती में, ठीक है, होता है. Because our opinions change, the situations change, and because the situation changes, our viewpoint changes. You cannot put your words into other people's mouth. You cannot. You cannot tell people what they are allowed to say and what they're not allowed to say if they are not crossing any boundaries. There's no boundaries being crossed. There are people here on YouTube who are going to extremes by defaming, demeaning, humiliating, stripping people naked digitally. You know, that needs a voice. But if you start like nitpicking what friends are saying, really? So what is the definition of friendship? Gee, it looks like the one time people are friends, next day they're pulling. Yeah, absolutely. Absolutely, Smriti, you're right. Hello, lady, you watch my show. Um, do you know what's really weird? I discussed the 50s show yesterday. Yeah, I do. Though I'm a little bit upset that Rajat's been had to go because of his injury, but I really haven't come here to talk about that show. But if you want to, then tomorrow I can maybe do a live and we can talk about the 50s show. And it's got one of my favorite people in there anyway. I mean, obviously after Rajat.
Yeah. So coming back to YouTube, right? YouTube ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ complicated ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ um maybe I subscribe to your channel. I don't know. I think I might have. Yeah, the 50s. Um yeah, so YouTube. Let's come back to YouTube channels. Um what was I saying? I was saying something. Oh, this is why I don't do lives because ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਦ flow break ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ now I've forgotten. Anyone want to remind me what was I saying? Oh, YouTube relationships. Yeah, so YouTube over the last 5 years as I know it, it's really changed from when we first came on and then, you know, Meri Pyari Bindu, Meri Bindu Bindu, and she started a channel, discussion channel, whatever. And as it started to where we are now, it's evolved. It's evolved a lot. And, you know, I'll say I'm glad she's out of it because this is not how she bloody started it, although she's created a horrific mess in between. But, you know, if she's left it and fed up of it, well, good on her too. I mean, there's no love lost between me and her, don't get me wrong, but, you know, it is what it is. But from there has the root cause of these issues and all these people, but even me, even the girl I'm talking about, we've all come from there, right? And we've all chosen our own paths for whatever reason. Some of us like stood solid on what we believed, and you know, and that's in Masnihoy. Yes, in terms of, you know, what we supported or what we didn't support. Yes, that's in mas ऐसे हुए हैं that then we sort of moved on to other people who also had the same ideology as us. And then you get to know them and then they become your friends, you know, and that is it. We've moved on. Everyone's moved on. This whole old pattern of some of the people from her, I don't even want to discuss her or her channel, but it stems from there. You know, they've scattered everywhere in every direction, and people are coming at people from all angles. At this moment in time, with the exception of Richa's channel, where the panelists and the audience, yes, it's grown, but we still have that same cause. Everyone else, they're going in all different directions. Half of them don't know if they're Arthur or Martha. Half of them don't know if they're in support. Half of them don't know if they're against. And now we've got to a point where they're just fighting each other. There's no cause. There is absolutely no cause. There's nothing that they stick to with conviction to say, yes, this is what we support. They literally they go ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਗੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨਾ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਦਕਾਂ ਕੱਢਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ yeah and as a last thing and if I wanted to right because ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਚੀਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚੀਕਦਾ ਕਿ ਸਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਡਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ So just to finish up, I'm going to say one thing because, I mean, I was going to come and say it on Richard's live a bit later, but my live kulli at the Mecca in the I detest Bona, detest him. Bona Banku. लेकिन मैं
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਔਰਤ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੰਜਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੀ, ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੰਜੋਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਸਮਝੋ, ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਬੇ ਉਹ ਪੋਤਾ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੰਜਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? I have lost all respect for you. ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁੱਝ-ਬੁੱਝ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਾਹਲੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ that rocks the boat, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹੋਊਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਗੂ ਰੰਗੀਲਾ sharing is caring ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੰਜਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੰਦਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਦਕ ਆ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਜਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ, you know, they're two peas in a pod। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਬਾ ਜਿਹਾ ਕਸੂਤਾ ਗੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੋੜ ਤੇ ਆਇਆ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਅੜਬ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅੜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੜਬ ਆ, ਮੈਂ ਸਟਬਨ ਆ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਆ। ਅੜਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੰਬਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ, ਉਨੀ ਕੁ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਚਲੋ, इतना ही कहना था। So no doubt Rich will do her live later. I will pop into that live. और हाँ, मैं ये वहम भी निकाल दूं किसी को भी कि ये रोज आती नहीं है रिचा के पास। रिचा मेरी दोस्त है। रिचा को पता होता है कि मैं कब जा सकती हूँ, कब मैं नहीं जाती। ठीक है। और किसी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि हाँ वो तो आती नहीं, इसकी तो कोई गड़बड़ है। हाँ, एक और बात भी क्लियर करती हूँ, दोस्त, बात तो दोस्ती की हो रही है ना, मैं तो डंके की चोट पर कहती हूँ कि रिचा मेरी दोस्त है। ऐसे ही बकवास हो रही है मेरा नाम लेके।
ਜੋਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਲਈ। ਜੋਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੋਸਤ ਸੀਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ। ਜੋ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਗਲਤ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਗੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫॉर ਜੋਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੀ ਬੰਦੋ, ਮੇਰੀ ਪੰਦੂਰੀ ਬਿੰਦੂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ठीक है, सो जिन्हें जो कहना कि पीछे से मिल गई है, ज्योति इज माय दोस्त, राइट। वो किसी से पीछे पूछे से नहीं मिली। आई डोंट थिंक रिचा दे वो तो चैनल ते भी नहीं कदी गल हुई, इवन इन कमेंट्स आई डाउट इट वेरी मच। एंड रिचा इदा किसी नाल लिंक नहीं रखती। सो अपनी स्टोरियां अपने कोल रखो, राइट। मैं तो कोई लुक छुप के दोस्ती ना कीती आ ना मैं करनी आ। I was transparent on I was always transparent about how I feel about Jyoti, right? So stick that in your pipe and fucking smoke it, you twats. चलो इतना ही था, हंसते वास्ते रहो। Friends, not frenemies, okay? Come out of that frenemy zone. Signing off. Bye-bye.